Good morning, everyone. I am Dr. Rakesh Solanki, currently working as Assistant Professor in Department of Orthopedics in Index Medical College Hospital and Research Center in Indore. Today, we are going to discuss about the supracondylar fracture of the humerus. Let us begin. So, supracondylar fracture of the humerus are the commonest fracture in children, one of the commonest fracture in children, but very uncommon after the facets have closed, and also called the Malgaine's fracture. The humerus breaks just above the condylar area, the supracondylar area. The fractured distal fragment may be displaced either anteriorly or posteriorly, and these fractures are more common in boys as compared to the girls. There are two types of the supracondylar fracture of the humerus. The commonest type is extension type, while the flexion type is very less common. जो डिस्टल फ्रेगमेंट होता है फ्रैक्चर के बाद में या तो एक्सटेंशन में जा सकता है या फिर फ्लेक्शन में. सो एक्सटेंशन टाइप ज्यादा कॉमन है फ्लेक्शन की तुलना में. This is the picture showing the bony landmark of the distal humerus, and as you can see, this is the lateral epicondyle of the humerus, this is the medial epicondyle, this is the condylar area, and the fracture just above this condylar area, approximately here, is known as the supracondylar fracture of the humerus. The mechanism of injury of supracondylar fracture होता कैसे है? So the fall on outstretched hand with forearm in pronation, like this. This is your forearm. So fall on outstretched hand like this, and your forearm in pronation. This is supination, this is pronation. The distal fragment is pushed backward and twisted inward. डिस्टल फ्रेगमेंट जो होता है वो पीछे चला जाता है और अंदर की तरफ ट्विस्ट हो जाता है. Posterior angulations or displacement suggest a hyperextension injury which is more common. अगर फ्रैक्चर साइट पे पोस्टीरियर एंगुलेशन है या पोस्टीरियर डिस्प्लेस्ड है डिस्टल फ्रेगमेंट, इसका मतलब यह है कि पेशेंट को हाइपर एक्सटेंशन इंजरी हुई है. तो पोस्टीरियर एंगुलेशन सजेस्ट अ हाइपर एक्सटेंशन इंजरी. और इसका अपोजिट होता है अगर एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट है. देयर इज एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू डायरेक्ट फॉल ऑन द पॉइंट ऑफ एल्बो विथ जॉइंट इन्फ्लेक्शन लाइक दिस. अगर एल्बो फ्लेक्स है और डायरेक्ट फॉल हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, तो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि बहुत रेयर है, इतना ज्यादा नहीं होता. फ्लेक्शन टाइप होगा ये. Now the classification. So there are various classification. One of the commonest classification used for supracondylar fractures is Gartland classification. Now type 1 is purely undisplaced fracture. Type 2 is angulated fracture with posterior cortex still in continuity. टाइप 1 में फ्रैक्चर तो होगा बट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इंटीरियर पोस्टीरियर सारे कॉर्टेक्स कंटिन्यूटी में होंगे. देयर विल बी नो ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्रैक्चर लाइन. बट टाइप 2 में क्या होगा कि एंगुलेशन हो सकता है, स्लाइट एंगुलेशन, बट पोस्टीरियर कॉर्टेक्स विल बी स्टिल इन इंटैक्ट विद द रिमेनिंग बोन. पोस्टीरियर कॉर्टेक्स विल बी इन कंटिन्यूटी. पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, तो टाइप 2 होगा. देर आर टू सब टाइप्स ऑफ टाइप 2 गाटलेन. टाइप 2A इज लेस सीवियर इंजरी विद डिस्टल फ्रेगमेंट ओनली एंगुलेटेड. जो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो केवल एंगुलेशन में होगा. टाइप 2B में ज्यादा सीवियर होती है, एंड द डिस्टल फ्रेगमेंट is both angulated and rotated. If it is your distal fragment, then it will be both angulated either anteriorly or posteriorly, and it will be both rotated, lateral or medial. The mal rotation can be lateral rotation or the medial rotation. ठीक है. So type 1, type 2, type 2 में type 2A only angulation, type 2B angulation and rotation also.
टाइप 3 जो होगा वो कंप्लीटली डिस्प्लेस फ्रैक्चर होगा. देयर विल बी नो continuity between the two fragment, proximal and distal. This is the diagrammatic representation of supracondylar fracture of the humerus. So, as you can see here, it is type 1. There is only fracture line you can see, but there is no break in the continuity of anterior or posterior cortex. Sorry. This is type 2. There is a break in the continuity with angulation, but there is intact posterior cortex. And this is type 3, in which you can see the complete displacement of fractured fragment. ये टाइप 1 है. इसमें फ्रैक्चर तो है सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस का, बट कॉर्टेक्स इंटैक्ट है, इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों. ये टाइप 2 जिसमें पोस्टीरियर कॉर्टेक्स इंटैक्ट है एंगुलेशन होने के बावजूद. ठीक है, तो ये टाइप 2 है, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स की कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है. और गार्टलेंड टाइप 3 ये है जिसमें आफ्टर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के बाद प्रॉक्सिमल और डिस्टल फ्रेगमेंट दोनों के बीच कोई कंटिन्यूटी नहीं है. तो ये कंप्लीटली डिस्प्लेस फ्रैक्चर है. दिस इज गार्टलेंड टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. Now, what will be the clinical feature of the supracondylar fracture of humerus? So, there will be definitely a history of fall, one outstretched hand with forearm in pronation. जैसा कि मैंने पहले बताया आपको. Complaint क्या होगी? Patient will typically complain of pain in the elbow joint. There will be swelling, and the child will not be able to move his elbow due to tenderness, severe pain. There, on clinical examination, there will be on inspection, you can see the S deformity of the elbow. ठीक है, एक क्लिनिकली आप देखो तो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट के कारण शोल्डर से लेके एल्बो तक एक क्लिनिकल पिक्चर बनता है एस शेप्ड डिफॉर्मिटी के कारण. यू कैन विल गेट दैट एस शेप्ड डिफॉर्मिटी. एंड बोनी लैंडमार्क्स जो होंगे वो एबनॉर्मल हो चुके होंगे. Both active and passive movements of the elbow will be decreased definitely. You must assess the neurovascular structure. You must always check the radial pulse, as there are very high chances of damage to the neurovascular structure. हमेशा आपको रेडियल पल्स चेक करनी चाहिए, फिंगर ब्लैंचिंग देखना चाहिए, फिंगर मूवमेंट और सेंसेशन देखना चाहिए, क्योंकि न्यूरोवास्कुलर इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके के फ्रैक्चर में. एंड नॉर्मल जो बोनी रिलेशनशिप होती है olecranon and tip of olecranon and the humerus epicondyle, that is normally maintained unless fracture is grossly displaced and rotated. Sorry. If we talk about the displacements in supracondylar humerus fracture, so the displacements can be posterior tilt and posterior shift. There can be proximal shift, there can be medial tilt, or the median and lateral shift, and there can be internal rotation. So ये जो displacement है ये हम बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू द डिस्टल फ्रेगमेंट ऑफ, जो डिस्टल फ्रेगमेंट है फ्रैक्चर हुआ उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. जो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो पोस्टीरियर टिल्ट हो सकता है, पोस्टीरियर शिफ्ट हो सकता है, क्या तो प्रोक्सिमल हो सकता है शिफ्ट जिससे शॉर्टनिंग होगी, मीडियल टिल्ट हो सकता है, या मीडियल और लेटरल शिफ्ट हो सकता है. और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर रोटेशनल डिफॉर्मिटी है इंटरनल रोटेट हो सकता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्चर पैटर्न यू कैन गेट one or the combination of this type of displacements of in supracondylar humerus fractures. Now, how will you investigate? So, after thorough clinical examination, after checking and confirming the neurovascular status, you should advise the X-ray. अब X-ray का advise करोगे AP and lateral view of elbow. This is the radiographic image showing normal lateral radiograph of the elbow. This is the radial head, this is the olecranon, and this is the distal humeral area or the condylar, humerus condylar area. This is your normal elbow joint. There is no break in any continuity of any cortex. This is the normal lateral radiograph of the elbow joint.
Now one must look for the anterior and posterior fat sign. So these are the radiolucent area which is increased after the distal humerus fracture. The increase is due to the effusion. After fracture, there is joint effusion and hematoma. The hematoma pushes this fat pad anteriorly here and posteriorly. So you get increased translucency of this anterior and posterior fat pad. This is known as fat pad sign. So fat pad sign is clearly seen in lateral view. Sorry. Now, if fracture is posteriorly displaced, fracture line runs obliquely downwards and forwards, and distal fragment is tilted backwards and shifted backwards. This is undisplaced fracture supracondylar humerus. So, if the fracture is anteriorly displaced, fracture line runs downward and backwards, and distal fragment is tilted forward. अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो, एंटीरियर ह्यूमरल लाइन जिसे कहते हैं, on a normal lateral X-ray, a line drawn along the anterior cortex of the humerus should cross the middle of the capitulum. This is the capitulum. ये capitulum है. अगर आप anterior humerus cortex से एक line draw करेंगे straight downward, तो ये capitulum को center में cross करेगी, middle में normally. Bowman's angle आपको पता होना चाहिए. Normally angle is less than 80 degrees. You will get fishtail sign. Now, what is fishtail sign? So this spike, fractured fragment of proximal fragment, gives you an appearance of fishtail. This is known as fishtail sign. Now let us discuss about the treatment of this type of fracture. If the fracture is undisplaced, so the elbow is immobilized in 90-degree and a neutral rotation for 3 weeks. फ्रैक्चर डिस्प्लेस नहीं है, आपको एल्बो को इमोबिलाइज करना है अबव एल्बो स्लैब में, हाई आर्म स्लैब में 90 डिग्री पे, बट मेक श्योर एंड कंटिन्यूसली चेक फॉर द रेडियल पल्स को चेक करना है. कई बार क्या होता है कि 90 डिग्री में रेडियल पल्स गायब हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू पाल्पेट द रेडियल पल्स, इट डिसअपियर्स ड्यू टू द इम्पीचमेंट ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी. ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन में स्लैब लगाना है. 90 या उससे ज़्यादा ले सकते हैं, 90 से कम फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए. और थ्रू आउट द प्रोसीजर यू जस्ट चेक फॉर द रेडियल पल्स. और 3 वीक्स के लिए आपको लगाना है, बट पेशेंट शुड बी फॉलो अप एवरी वीक एंड चेक एक्सरे शुड बी डन. बार बार आपको हर हफ्ते चेक एक्सरे करके देखना है ताकि डिस्प्लेसमेंट, कहीं फ्रैक्चर डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा है, आपको कंफर्म करना चाहिए. अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर आफ्टर 3 वीक्स, रिमूव द स्लैब, चेक एक्सरे, गेट अ चेक एक्सरे डन एंड स्टार्ट एक्टिव मोबिलाइजेशन. ठीक है. नाउ व्हाट इफ द फ्रैक्चर इज posteriorly angulated? Now this type of fracture usually requires reduction under anesthesia, and if the reduction is unstable, it should be fixed with percutaneous K wires and immobilized in high arm slab for 3 weeks. ठीक है. अगर फ्रैक्चर पोस्टीरियरली एंगुलेटेड है तो यूजुअली अंडर एनेस्थीसिया आपको रिडक्शन मैन्यूअर ट्राई करना चाहिए, और क्लोज रिडक्शन हो गया देन अप्लाई अबो एल्बो स्लेब फॉर 3 वीक्स. बट अगर मतलब रिडक्शन इज अनस्टेबल, आफ्टर रिडक्शन इफ यू फाइंड दैट योर रिडक्शन इज अनस्टेबल, तो आपको के वायर से फिक्स कर देना चाहिए परक्यूटेनियसली, और 3 हफ्ते के लिए हाई आर्म स्लेब में इमोबिलाइज कर देना चाहिए. But what if the fracture is angulated and malrotated or grossly displaced posteriorly? So usually this type of fractures are associated with severe swelling and often they are unstable. There is high risk of neurovascular injury. So this type of fractures are reduced under general anesthesia and then fixed with percutaneous K-wire. This is the diagrammatic representation of the reduction of distal supracondylar humerus fracture. The arrow pointing upward is the direction of the traction. Counter traction, this is the traction applied over the forearm with your both hand. First of all, you must correct the coronal tilt in your AP radiograph. You can manipulate these two condyles from lateral or medial, and you can correct the lateral and medial shift.
After correction of the coronal tilt, just pronate the forearm and flex. जब आप प्रोनेट कर रहे हो साथ में फ्लेक्शन करो, और साथ ही साथ while flexing you can apply pressure over distal humerus condyle, pushing them anteriorly and correcting any malrotation, and confirm under image intensifier. If your reduction is satisfactory, then put percutaneous K wires and to check for the stability. If it is stable, then apply high arm slab. Now, when to go for open reduction? So, as with any other fracture, when your fracture cannot be reduced by any closed method, if your fracture is unstable, if it is associated with any compounding, or there is any open wound at the fracture site, if there is vascular or neurovascular damage, and if there is imposition of the biceps. एक चीज आपको बता दूं मैं, इफ देयर इज एनी imposition ऑफ द बाइसेप, तो आपको एंटीरियर आर्म पे यहाँ पे आपको डिम्पलिंग साइन मिलेगा, ठीक है, पकरिंग ऑफ द बाइसेप मसल होगी, साथ में आपको एक डिम्पल साइन मिलेगा, और सीवियर ब्रूजिंग होगी, वहां पर हेमाटोमा होगा। तो ये सारे ओपन रिडक्शन की इंडिकेशन है। आपका क्लोज रिडक्शन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या क्लोज फ्रैक्चर रिड्यूस नहीं हो रहा है, फ्रैक्चर ओपन है, साथ में कोई वुंड है, कोई घाव है, साथ में आपको लगता है कि न्यूरोवास्कुलर डैमेज है, या तो रेडियल आर्टरी नहीं आ रही है, या ब्रेकियल आर्टरी डैमेज है, आपको कुछ डाउट है, सस्पिशन है, या फिर कुछ इंटरपोजिशन ऑफ द बाइसेप है, इन कंडीशन में आपको ओपन रिडक्शन ट्राई करना है। Now, when to put skeletal reaction? When your reduction cannot be achieved and manipulation is necessary, excessive swelling and circulatory compromise, and inherently unstable fracture. In this condition, you must apply an skeletal traction in the form of olecranon pin. Now, if we talk about the pin fixation of the supracondylar humerus fractures, you have various options. You can apply two lateral pins from here, only two lateral pins. You can put two cross pins, as you can see in this X-ray picture. These are the two cross pins. The supracondylar fracture is fixed with two cross pins, and you can go for two lateral and one median pin. Sometimes, if the fragment is large, then you can go for three lateral pins also. What are the contraindications? If there is severe swelling, if the fracture is open, irreducible fracture, and the late diagnosis, इन कंडीशन में आपको परक्यूटेनियस स्पिनिंग अटेम्प्ट नहीं करना है। जब स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, फ्रैक्चर ओपन है, क्लोज मेथड से रिड्यूस नहीं हो रहा है, या डिलेड प्रेजेंटेशन है, सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर इग्नोर किया गया है, लेट डायग्नोसिस हुआ है, इन कंडीशन में यू मस्ट नॉट ऑप्ट फॉर पिन फिक्सेशन। Now, when to fix with plates and screw? Again, if your fracture cannot be reduced by closed method, wound is compound, concurrent neurovascular injury, concurrent forearm fracture है, और अब चाहते हैं कि prolonged immobilization नहीं हो, if you want to avoid prolonged immobilization, then go for plate and screw so that you can mobilize the patient's elbow as soon as possible, ठीक है, इन कंडीशन में आप प्लेट और स्क्रू भी फिक्स कर सकते हैं। Now, what are the complications? So, there are early complications like vascular injury. The brachial artery is injured most commonly. There are chances of nerve injury also, like median, radial, and ulnar nerve, but chances of median nerve injury, especially the interosseous, interinterosseous branch, are very high. Walkman's ischemia and compartment syndrome can also develop. तो अर्ली अगर फ्रैक्चर है उसमें आपको न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज या इंजुरी हो सकती है, जिसमें ब्रेकियल आर्टरी इंजुरी सबसे ज्यादा कॉमन है। मीडियन नर्व सबसे ज्यादा इंजूर होती है, इसमें भी मीडियन नर्व की एंटेरियर इंट्रोशियस ब्रांच, और कई बार कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जाने का खतरा होता है, जिसके कारण जिसे हम वॉकमैन इस्चेमिया और कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशंस आर देयर लाइक माल यूनियन. The uncorrected sideways tilt and rotation may lead to varus or valgus deformity. The gun stroke deformity is the varus deformity at the elbow. After malunion of the supracondylar humerus fracture, elbow stiffness can occur. There are chances of myositis ossificans, tardy ulnar nerve palsy, non-union which is least common. तो लेट कॉम्प्लिकेशन जो होती है उसमें माल यूनियन सबसे ज्यादा कॉमन होता है, खास करके अगर आपने जो
रोटेशन है और साइड टिल्ट है वो करेक्ट नहीं किया है, तो मोस्ट कॉमन आपको मिलता है गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। इसमें वेरस डिफॉर्मिटी होती है ग्रॉस, और आपका हाथ ऐसा वेरस में होता है, जिससे हम गन स्टॉक डिफॉर्मिटी कहते हैं। एल्बो स्टिफ हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चर्स हो सकते हैं, वर्कमेंस कॉन्ट्रेक्चर हो सकता है, मायोसाइटिस ओसिफिकेशन ओसिफिकेंस हो सकता है, अनलर्न और इंजुरी हो सकती है, डिलेड, नॉन यूनियन हो सकता है, बट नॉन यूनियन बहुत रेयर है। सुप्राकॉन्डाइल ह्यूमरस में यूजुअली नॉन यूनियन नहीं होता, इट इज लीस्ट कॉमन। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग वर्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द फ्लेक्सर्स ऑफ द फोर आर्म, फ्लेक्शन ऑफ पीआईपी डीआईपी एवरी फिंगर, ठीक है। एंड दिस is injury to brachial artery. As you can see, the spike of the proximal fragment anteriorly is impinging on the brachial artery, and so that you won't get any radial pulse palpable. ठीक है, ये जो एंटीरियर स्पाइक है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस शाफ्ट का, ये इम्पिंज कर रहा है ब्रेकियल आर्टरी को। Thank you very much. We are done with our today's lecture, supracondylar on supracondylar humerus. Thank you very much.